हाँ जी, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। भाई कैसे हो आप लोग? तो जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम लोग कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज को लेकर आएंगे, तो आज वी आर लकी इनफ कि हमारे साथ दो एस्टीम्ड कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज हैं हमारे साथ, आशीष अग्रवाल जी एंड अंकुर विला जी। इससे पहले कि मैं इनका इंट्रोडक्शन कुछ भी दूं, मैं चाहूंगा कि खुद ये, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे ये लोग हैं और मैं पहले तो सौभाग्यशाली हूं कि मैंने इन दोनों के साथ काम किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि ये अपने अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करें आप सब बच्चों को। तो ओवर टू यू आशीष जी। So thank you, Amit Popliji. Thank you for the inviting us for the session. So I am a 2001 batch chartered accountant. I have been working in the corporate side since then. More than 20 years of experience on the corporate side. I have worked with IDBI Capital, ICICI Bank, Jindal Steel and Power, Semcorp. Right now, I'm a partner at UTI Alternatives. It is an alternative investment fund of UTI Mutual Fund, and I'm a partner there. I also had my own venture in between. So I have experience on both corporate side, on the banking side, and on as an entrepreneur also. I'll be happy to meet all of you today and answer all your questions which I can. Over to Ankush. अंकुर जी, आप भी प्लीज अपना Yeah, इंट्रोडक्शन बच्चों को दीजिए। हमारे साथ इस टाइम सीएमए sure. प्लस सीए के बच्चे जुड़े हुए हैं। Good evening, students. It's an absolute pleasure to be here with you today. So, my name is Ankur Billa. I'm a chartered accountant of 2002 batch with over 2 decades of experience in dynamic banking and financial institution sector. Like each one of you, I too boarded on the CA journey, with a thirst for knowledge and determination to be successful in this corporate landscapes. The path was not smooth, and it will not going to be smooth for you as well. But trust me, it was those only challenges that molded me into a professional that I am today. So I understand from Amit Popli sir that there will be a lot of questions in your mind how to seamlessly transition into this corporate world after completing your CA course, and how to thrive and excel once you are there. So I'm happy to address those questions along with Ashish to our best of our abilities. But beyond these technicalities, I just want to emphasize something very important, that with the power of CA qualification and the unique skill set that this course bring in to you guys, it's absolutely fantastic. So the journey that you are starting is not just about numbers, financial statements, and it's actually about developing a mindset, the problem solving mindset, the strategic thinking that each one of you are having. So these attributes that CA course bring to each one of you will propel you, to forward in your respective fields, whatever field you choose, be it banking, finance, audit, consulting, anything. So just keep these thoughts in mind, that it's not only about the course, it's about the overall personality which this course bring in each one of you. So with this thought, I'll pass on to Amit Popli sir for questions. What do you guys have? जी सर, मेरे पास कुछ बच्चों के ही आए क्वेश्चंस हैं। मैंने इनसे क्वेश्चंस इनवाइट किए थे और वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोनों हमारी आज की स्पेशल गेस्ट के सामने। जिसमें से पहला क्वेश्चन जो बच्चों का है कि सर, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए ना कम्युनिकेशन स्किल हमारा, क्योंकि हम जो सीए या सीएमए कर रहे बच्चे होते हैं, वो क्योंकि आप भी इस स्टेज से गो थ्रू कर चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा कि हमें शायद अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल को निखारने का मौका नहीं मिलता। तो क्या कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हुए या जाने से पहले क्या हमें ये कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर करके जाना चाहिए या कैसे? आप दोनों में से कोई भी जवाब Ashish? देना चाहिए। Okay, Sure. okay. So Ashish, you go first, then I'll add. Okay. तो मैं सबसे पहले अमित जी बताना चाहूंगा कि जब मैंने भी शुरुआत की थी 2001 में, तो कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हम कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अ, हमारे घर में भी हिंदी का अखबार आता था, हिंदी में पढ़ते थे हम उस समय, उसी तरह से बड़े हुए हम। कोई पूछ रहा था व्हाट इज योर नेम, तो शायद वो बताते हुए भी हम हिचकिचाते थे उस समय पे।
So from that time to now, obviously 20 years has changed me as a professional in a big way. Uh, Obviously, knowledge is the most important thing. But in today's world, you cannot have a life without communication skills. Okay, it is very important, paramount. It doesn't mean that you need to have it on the day you are becoming a chartered accountant. Okay, now the institute gives opportunity of GCMS classes and all those things for you to upgrade your communication skills. Um, you have a lot of options. There are online classes available to upgrade your communication skills. So it is important. It is not paramount. People in the beginning, when you look for your first job, what is more important is your qualification, but still the way you present yourself, the way you communicate, you are able to tell your what you have done in your articleship. You're able to express that. It is very important. But there are enough ways, in a more than enough ways, right now to get to that level of communication. I would recommend to people start reading newspapers, uh, watch online videos, and you if you don't have time right now when you're doing your studies, you can always do it when after giving exams and when the results are yet to come. But it is an important part of your overall personality development. How do you communicate with the overall world? Ankur, Ankur you sir. can add your thoughts. Yeah. But see, again, the same thought. It's not that it's not important. It is very important. Corporate world में जाने के लिए you need to have a good communication skills. Not only, at the time of entering into a interview, and but after throughout your journey in corporate world, you need to have that kind of communication skills. But as Ashish mentioned, सबका starting के वक्त उतना communication skill नहीं होता. We are from various backgrounds, so there are हम different region से आ रहे हैं, we have a different mother tongue, so uh, all these things are there, but you need to inculcate your learning skills again. You need to do some coaching if you want to attend some online classes, go for it. But अगर मैं ये बोल दूं कि ये requirement नहीं है, तो then we will be fooling ourselves. There is a definitely a requirement of having a better communication skills once you enter into a corporate world. So आपका एग्जाम देने के बाद and the time that you have during your interviews, and also there is some 2 to 3 months time. So during that period, I would encourage each one of you to go for those classes, brush up your interview skills, because आपने वो स्टार्टिंग में करी नहीं होंगी, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होता फर्स्ट इंटरव्यू में क्या बैठना है, कैसे क्वेश्चंस आने हैं. जस्ट प्रिपेयर. लॉट ऑफ ऑनलाइन स्टफ इज देयर. हमारे टाइम पे उतना नहीं होता था, तो हमें खुद ही स्मार्ट बनना पड़ता था. बट आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन भी. नहीं तो ऐसे कुछ कोर्सेज भी आते हैं, शॉर्ट 7 days 10 days कोर्स, जहाँ पे you will not be perfectly good in communication, but at least you will get a fair sense of what need to be and how things need to be presented in an interview and going forward as well. So ये जर्नी एक continuous जर्नी है. It's not that 7 8 days में you will be perfect in communication and all, but keep this thing in mind. In overall your career progression plan, you need to have that kind of communication skill if you want to grow. So थोड़ा सा लर्निंग अपना उस साइड पे भी करना पड़ेगा. बैंकिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ये सब चीजें तो आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे, बट इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. एक सर मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी आई है, तो मैं सारी क्वेरीज को भी रोक कर एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी मेरे पास यूट्यूब पे आई है, मैं वो आपके सामने लाना चाहूंगा. कृष्णा महेश्वरी, इनकी क्वेरी है, सर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हाउ ओपन वी हैव टू टेल लाई. समटाइम आई सी टू सर्वाइव सम पीपल यूज इट, आई कांट टेल लाई. वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए झूठ बोलना जरूरी है. आपका व्यूज, आपके व्यूज प्लीज. See, I would say it's not about truth or lie. It's being, sometimes straightforward approach doesn't work. So you need to be smart and practical and enough to handle that situation. Uh, झूठ बोलना is not a answer that anyone of us would like, but yeah, be honest, and integrity is very important in corporate world. Don't there is no shortcut for success. और इन सब चीजों से, झूठ से और उन सब चीजों से जितना बच पाओ उतना बेटर है. Be honest with your job, be honest with your work, and then sky is the only limit. Don't fall into this practice of telling lie and
honesty is a key to success. So I agree आशीष सर, with Ankur fully जी आशीष on सर, this on this topic. Yeah. Yes, जी yes, प्लीज Amit. कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. So certainly I agree with Ankur fully on this, because if you lie to your customers, I think in corporate world you may be having customer facing proposition. Means as a chartered accountant, if you tell your clients कि tax नहीं pay करना पड़ेगा, बच जाएगा, and you get that customer onboarded, तो वो तो finally आप नहीं deliver कर पाएंगे उसको. So झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है. You may have to tell truth in a more subtle way at times, but that is not a lie. अंकुर जी, मेरी अगली क्वेरी आपके लिए है. जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये कि क्या सीएफए और सीपीए करना भी जरूरी है यूएसए या कनाडा से, अगर हम इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब लेना चाहते हैं, या फिर सीए या सीएमए की डिग्री मोर देन इनफ है हमारे पास? Single line answer is CA की degree more than enough है. So there is lot of opportunities in India for a CA course across the sector. Banking ले लो आप, financial industry, कोई भी आप segment उठा के देख लो, हर जगह पर finance experts की जरूरत है. And there are many fields under CA. You can be a tax expert, you can be an account expert, you can be an overall finance expert. So there are various industries and various multiple segments that you can go into after completing the CA. So multiple courses करने से, बहुत ज़्यादा stress लेने से, I don't think it will benefit you. But see, learning and getting experience is part and parcel of your career. I mean, ऐसा नहीं कि एक course कर लिया और उसके बाद we are just, it's a very dynamic world nowadays. It's a very fast changing environment. So we need to equip ourselves to ever changing demands of this corporate world. So एक course करके, एक चीज के ऊपर expert करके वहीं पर ही नहीं बैठना. That will help you to enter into that field. But if you want to excel it further, you need to keep on learning. जितनी भी न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, आईटी के अंदर आ रहे हैं, इतने नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं. I'll just share an example. I'm in banking, so I am basically heading the credit underwriting process. So जो हम 15 साल पहले क्रेडिट अंडरराइटिंग की टेक्निक्स यूज करते थे, वो आज की डेट में बिल्कुल रिडंडेंट है. We rely a lot of on technologies, the data, the information that is available online. So वो सब चीजें हमारे पास पहले नहीं होती थी. So उन सब चीजों को अगर हम यूज करना ड्यूरिंग द our career journey, if we will not learn, we will be outdated. So it's always important to keep on learning, and it's not कि एक बारी हमने चीज को कर लिया या एक कोर्स को ले लिया तो वहां पे हम खत्म और उसके बाद सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा. ऐसा नहीं चलता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. सो अपने आप को आपने ग्रूम करते रहना है, कोर्सेज करते रहना है. बट अभी टू स्टार्ट विद आप सोचो कि मैं तीन चार क्वालिफिकेशन ले लूं और उसके बाद सब कुछ ज्वाइन करूं, तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट स्ट्रैटेजी. अगर अभी आपने सीए कर लिया है, आपके पास एक एडिशनल कॉमर्स या ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, so that is more than sufficient to enter into that sector, and then try to learn as you grow further in your career. आशीष सर, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है. जो बच्चे पूछ रहे हैं कि बहुत छोटे गांव या शहर से हूं और कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, कोई बहुत बड़ी सीए फर्म से कनेक्टेड नहीं हूं, छोटी सी सीए फर्म से कनेक्टेड हूं. क्या मेरा मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई स्कोप है? क्या मैं कभी उनके बारे में देख सकता हूं ये डिग्री लेने के बाद? तो देखो, सीए की डिग्री बहुत वैल्यूएबल डिग्री है. बहुत मेहनत करके ये डिग्री मिलती है. तो इट्स नॉट अ इजी टास्क टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक you all should realize it, that you have taken a big plunge for a very reputed educational background in this country. Okay, after being a chartered accountant. क्या बैकग्राउंड मैटर करता है? मैं आपको बता देता हूँ. तो मैंने भी आर्टिकलशिप बहुत ही छोटी सी फर्म से की थी. मेरे कोई पुरानी, मतलब मेरी फैमिली में कोई ग्रेजुएट भी नहीं था, मतलब जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव. तो जॉब करने का, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का तो मैं सोचा भी नहीं था. ना कोई कनेक्शंस थे, ना कुछ था. And from there, I think if I can work in a multinational company in a large bank, you can also do that. Now, what is required to do this is that you need to be very good in your education background. Okay,
So just every chartered accountant does not get that opportunity. You need to distinguish yourself, work really, really hard in your studies and even in your job. You need to improve your communication skills over a period of time. If you think whatever was there will help you get a job in a multinational company, you have to be different from other chartered accountants who have qualified. I give you an example. I have someone in my company who is working. His father is a auto driver, okay, and he works in a multinational company. He has come from that background, and he's working in a MNC. So everyone has this opportunity. The system, the companies do not differentiate people based on their background, but what they want is the quality which is coming to them in form of how well you have your concepts and how well you have changed as a in your behavioral aspects like communication skills, presentation, those kind of things. ग्रेट। अंकुर सर, मेरा जो बच्चों का अगला सवाल है वो ये कह रहे हैं कि सर सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, या फिर मतलब कितना ज्यादा हमें एक्टिव रहना चाहिए इन चीजों पर, और क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री के लिए ये सब सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं? ठीक है, देखिए जो प्रोफेशनल के लिए मैं कहूँगा वो लिंक्डइन ही है, जहाँ पर ज्यादा, बाकी फेसबुक और वो सब, इंस्टा, वो सब आपका अपना पर्सनल चॉइस है। बट हर हर इंस्टीट्यूशन की एक सोशल मीडिया पॉलिसी होती है। सो इट्स नॉट कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और उससे उससे रिलेटेड कुछ भी कंटेंट या कुछ भी विच इज डेट्रीमेंटल टू देयर रेपुटेशन, यू कांट पुट दैट ऑन द सोशल मीडिया। सो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। बाकी सोशल मीडिया में फ्रॉम नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू बी एक्टिव. It really helps, especially the network that you have with your colleagues, your seniors, your mentors. So that really helps. But बहुत ज़्यादा time spend करना उसके ऊपर, I don't think it's a good at this stage of your career, because you're just entering into you're just starting your career journey as a CA. So नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट है, बट थ्रू सोशल मीडिया करना चाहते हैं या आपके पास वैसे ही नेटवर्किंग की नेचुरल स्किल्स हैं, सो दोज डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइसेस. But once you join the corporate, just go through their corporate media, this social media policy, because there are a lot of restrictions. You can't just put your comments, and associating yourself with that your organization. So just keep those things in mind. Otherwise, networking is very, very critical at this juncture. I just want to add one thing here, that some companies do their as part of their background check also go through your social media profiles. So just be careful on what you are posting even when you're not employed, because that can be a part of your background check as your personality traits they try to gather from that. एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी आई है वेंकटा साई से, and he's saying, is it necessary that to survive in the corporate world we have to get the line boss is always right in every situation, even even for a CA firm as well? This question is equally applicable. See, what I can tell you, nowadays there is a lot of emphasis on diversity, and by diversity we just don't mean that it's a male female. It's a diverse opinion. So diverse opinion होना बड़ा जरूरी है और उसको प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है. It's not wrong to have a different opinion with your boss, but how you present that opinion and how you communicate that opinion with your bosses or with other stakeholders, that is going to be very important. So having a different opinion or always saying yes, I don't think that's a right strategy. You need to carry your own opinion, and whatever it is, be it right, wrong, you just need to communicate it properly and stick to that. And just have an open mind, even if you feel that whatever you are suggesting is not correct, or obviously, see, your boss, I'm assuming, will have more experience than you. So and experience do have value in corporate organizations. So अगर despite that, अगर आपके उनके साथ differences रहते हैं, so just discuss those things openly with him in a professional manner, and try to
resolve them, and it's always, have a open mind discussion or open perspective on things. So there is no right or wrong. It's just a diverse opinion that you can have from your boss. एक और क्वेरी आई है आशीष जी, स्टूडेंट ने पूछा है कि इन द इनिशियल इयर्स आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री शुड वी ऑप्ट फॉर अ बिग फोर कंसल्टिंग फर्म और द इंडस्ट्रीज? I think it is, there is no answer, there is no right or wrong answer for this. Okay, it is depends upon your interest. So in industry also, there are multiple kind of industry. You can be in banking, you can be on the corporate side, you can be in a fund. So industry wise also, it is not that you, either it's industry or it's consulting. Okay. So it depends upon what is your preference. Some people want to be on the consulting side. I think the experience which consulting gives is very different. Industry has completely different experience. So it is your own preference. Where do you see yourself after 3 years, 5 years? I think that is what you have to decide. What, because after spending 3 years in articleship, you already know what do you want to be. You have been dealing with people, because as part of your audit assignments, you have been dealing with people who are on the industry side, right? You have seen yourself on the consulting side. So you have to decide which way you want to be. So I think it's everyone's personal decision. एक बहुत ही ज्यादा मतलब जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर, वो इस टाइम मेरे पास आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सीए इंटर के दोनों ग्रुप एक साथ ना देकर एक एक ग्रुप करके दें, सिमिलरली सीए फाइनल के भी दोनों ग्रुप ना देकर एक एक करके दें। हालांकि अब रिसेंटली अभी सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा चेंज कर दिए हैं और नंबर ऑफ एग्जाम बड़े कम कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल सीए फाइनल में हमारे टाइम पे जो 8 एग्जाम होते थे, अब वो 6 हो गए हैं नए सिलेबस में। द सेम इज द केस विद द सीए इंटर एज वेल। तो आप क्या ऑप्ट करते हैं जब आपके पास ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आएंगे? तो क्या आप इनसे ऐसा सवाल पूछेंगे कि बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप? सी हम भी काफी बैंकिंग के अंदर फ्रेश सीएस को रिक्रूट करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि आपने दोनों ग्रुप में निकाला या एक ग्रुप में निकाला या एक एक करके निकाला। सो ये क्वेश्चन उतना रेलिवेंट नहीं रहता। इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लिया तो दैट हैव सम वेटेज। बट अगर नहीं भी होता तो जैसे आशीष जी ने भी कहा कि द फोकस करेंटली शुड बी ऑन क्लियरिंग द एग्जाम। दिस इज अ वेरी वेरी I would say a technical kind of a degree that you will have. So focus on that. अभी एक ग्रुप से हो रहा है या दो ग्रुप से हो रहा है, it again depends upon your individual capabilities. But अभी जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ सीए को निकालने पे होना चाहिए, पढ़ाई पे, एंड देन उसके बाद जो टाइम है, invest that time in grooming in Ankut, I think, has had some technical issue. आशीष जी, जो एक सवाल एक और जो बच्चे काफी पूछ रहे हैं वो ये है कि हमें एक गाइडेंस दे दो कि क्या ये कोर्स जो हम कर रहे हैं, ये चुन के हमने करियर का सही पाथ तो चुना है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं की? सर, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ रहे हो कि हम सीए करें कि नहीं करें, या करके गलती तो नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक माय आंसर विल ऑलवेज रिमेन दैट दिस इज अ वेरी prestigious degree. I always find myself swelled with pride that I am a chartered accountant. I am happy with my profession. There was one more question asked: should we do CFA? Should we do something else? And all those things. I am only and only a chartered accountant. I have not done anything. And if you ask me, do I need no taxation? I don't need no taxation. Google से मैं अपनी आइडिया करता हूँ, Google कर करके। Do I know accounting? मुझे इंडेस अकाउंटिंग कुछ नहीं आते हैं। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में हूँ मैं इस समय, फॉर इन्वेस्टमेंट्स देखता हूँ। So CA करके the opportunities which you get are immense. It is not only accounting, it is not only taxation what you can do. You can do anything. So it is a very reputed profession you are in. It is all about, I think, getting your act together in terms of focusing fully on your education and on your personality development. I think that is what it will finally matter. आशीष सर, एक मैं चाहूंगा कि एक आखिरी रिमार्क इन सब बच्चों के लिए, एक मोटिवेशनल कुछ ऐसा रिमार्क जिसे याद रखें और
मोटिवेट हो सके, क्योंकि हमारे साथ ये जो सीए बच्चे जितने भी आपको सुन रहे हैं ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस इनका इतना हिला हुआ है इस टाइम, इतनी ज्यादा कोचिंग्स में टाइम जाता है कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। फिर एग्जाम नजदीक आए तो फिर अब कोर्स कंप्लीट करने की बहुत ज्यादा मतलब सिरदर्दी रहती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी सीरीज भी आ जाती हैं, मैं कहूंगा नेटफ्लिक्स वगैरह पे, जो कहती है कि भाई बहुत तेल निकलता है इस कोर्स में, बहुत तेल निकलता है। ले देकर कुछ ऐसा रिमार्क जिससे ये मोटिवेट फील कर सके कि ये रही सही जगह पर हैं और इनकी मंजिल भी बहुत बढ़िया इन्हें मिलने वाली है। कुछ ऐसा रिमार्क आपकी तरफ से, कुछ इनके लिए मोटिवेशनल वर्ड्स। तो मैं आई थिंक अंकुर ने भी ये बात बोली थी कि कुछ भी आसान नहीं रहेगा। ये कोर्स आपको सिर्फ प्रिपेयर करता है फॉर दी व्हाट विल कम इन दी फ्यूचर योर करियर लेटर ऑन। चाहे आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप कंसल्टिंग में हो, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, कुछ भी आप करेंगे, तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम है ना, ये पूरी जिंदगी आपको आएगी। शादी से पहले आएगी, शादी के बाद भी आएगी, बच्चों के साथ भी आएगी, पूरी जिंदगी आएगी। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपेयर करता है, आपको तैयार करता है। आपको जैसे लोहे को तैयार किया जाता है ना, गर्म कर करके शेप बनाई जाती है उसकी, ताकि वो सब कुछ अपने अंदर समा सके, जिस शेप में चाहिए उस शेप में आ सके। तो ये लोहे की तरह आपको तैयार करता है ये कोर्स। मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए। और ऐसा कभी भी आप मेरे मन में नहीं आया कि मैंने सीए क्यों करी, मैंने एमबीए क्यों नहीं करी, ओके, या मैंने कुछ और सीएफए क्यों नहीं करी। कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया है। the value, the respect, the knowledge which it gives, I think you should always be thankful that you are into the right course. Study hard. जो आज आप मेहनत करेंगे 3 साल 4 साल अपने सीए के लिए, the reward will be very very good for your entire life. कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ये आप मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट कि सोने को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। वो आई थिंक यू विल गेट अ गुड स्लीप वंस यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेटल्ड इन लाइफ, यू विल गेट मच बेटर बेटर लाइफ। हाँ, ये वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा चलता रहेगा, ये इशू, बट आई थिंक हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, और कुछ नहीं करना है, अपनी मोटिवेशन अपने पास। जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड गो फॉर इट। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने अपना कीमती वक्त निकाला बच्चों के लिए। आज संडे का दिन था और क्योंकि मैं जानता हूँ मंडे टू सैटरडे जो कॉर्पोरेट लाइफ रहती है एमएनसीज कल्चर में, उसके बाद भी आपने संडे का दिन फैमिली से लेकर हमारे लिए निकाला और इन बच्चों को भी अपनी फैमिली समान ही समझा। मैं एक और प्रार्थना आपसे करूंगा कि जब जब ये बच्चे जब जब पुकारें आपको तो आप जरूर आए और इनको बिल्कुल जरूर गाइडेंस दें। और कभी ये इंटरव्यू देने आपके पास आए तो वो प्रोफाइल के अंदर भी लिख दें कि सर हमने आपका ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, तो प्लीज आप इन्हें पॉजिटिवली कंसीडर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन सब थैंक बच्चों यू की सो तरफ मच। से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड Thank you, थैंक Amrut. यू, Thank you, थैंक्स अ and लॉट I'm सर। really happy if I have been able to make some difference in their thinking. So I'll be I'm thankful if there is some change which happens. थैंक Thank यू you सर, so much. थैंक यू।